बड़ोदरा महानगर पालिका के नए डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर केतन जोशी और साथ ही डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर की अगुवाई में आज परिचय और संकलन की बैठक का आयोजन हुआ। दरअसल ये जो बैठक है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अगुवाई में आयोजित होती है, लेकिन क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा इस वक्त गांधीनगर में है, इसीलिए नए डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर केतन जोशी और साथ ही डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर की अगुवाई में कर्मचारियों की परिचय बैठक और साथ ही संकलन की बैठक का आयोजन हुआ था। बड़ोदरा के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर इस दौरान चर्चाएं की गई थी। वैसे आपको ये भी बता दें कि आज की जो बैठक आयोजित हुई थी, इसमें चारों जोन के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, चारों जोन के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर और साथ ही सभी कार्यपालक इंजीनियरों के साथ बड़ोदरा महानगर पालिका के बड़ी कचहरी पर सभी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। वडोदरा म्युनिसिपल કોર્પોરેશનની જે સંકલન મિટિંગ માનનીય કમિશનર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને મળે છે, તેમાં આજરોજ વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી પૂર્ણ થાય, એમાં ડીલે ના થાય, ખાસ કરીને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ, સફાઈની કામગીરી અને જે પ્રોજેક્ટ્સ ચાલે છે એના વિના વિલંબે ઝડપથી પ્રક્રિયા હાથ ધરાય અને મહત્તમ લોકોને સુખાકારી માટે સવલતો ઊભી થાય તે પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। દરેક જે ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સ છે એમને ત્વરિત કામો પૂરું કરાવવા માટે તમામ ઝોનના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર અને વિવિધ રોડ બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ્સના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરને આ અંગે જરૂરી સૂચના આપવામાં આવી છે। એ બાબતની ગત મિટિંગમાં પણ ચર્ચા થઈ હતી અને આ વખતે પણ કામગીરી હાથ ઉપર છે તે પ્રકારનું કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીએ જણાવેલ છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।